Good morning, everyone. Good morning. Good morning. नहीं नहीं अंदर का थोड़ा ऊपर ऐसे रखो। एमटीएसएल पॉइंट ऑफ एक्शन को नीचे करना। एशियन सेशन में कंसोलिडेट करने लो आज। फिर से अच्छा खासा रैली मिलेगी। गुड मॉर्निंग नीलेश। नहीं डिमांड मैप करना है, रुक जाओ। नहीं आज कोई ट्रेड नहीं हुआ। कल का ही ट्रेड अभी तक चल रहा है यार।
Good morning, Chinmay. Good morning, Nitesh. Let's start with the analysis. Smita, okay. 2 more minutes, guys. We'll start in 2 minutes. ऑफिस कब आए हो लंदन से? कल, okay. Good morning, Haji. Long time. How are you? Sir, your free YouTube videos on demand and supply are awesome, filled with clarity and more knowledge. Thank you very much, sir, for your kind gestures. No worries, always welcome. Good morning, Smita ma'am. How are you? How was London? Perfect. I'll contact you post session. Okay, we'll talk. Starting with the analysis, what are the few major things that you have to keep in mind for today? At the current stage, if you notice, कल के दिन में एक movement develop हुआ था post 150% rejection, जो कि इस point of action में
डेवलप हुई है, करेक्ट? And when there is a movement developed with a high volume, giving a coverage towards a long, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या डेवलप किया था? राइट, आइसबर्ग जोन। राइट, आइसबर्ग जोन के साथ एक हाई वॉल्यूम डेवलप हुई थी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रेंज ऑफ मोमेंट पोस्ट रिट्रेसमेंट, जो कि ए वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सॉरी, राइट, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का रेंज ऑफ मोशन के थ्रू एक डेवलपमेंटल रिट्रेसमेंट फॉर्म हुई थी कल के दिन। राइट, उसी रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी, रिजेक्शन, रिजेक्शन के साथ एक हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ था। राइट, सो विद दिस हाई वॉल्यूम मार्केट ने क्या इंडिकेट किया? मार्केट फॉलो के लिए तो आया, राइट, रिट्रेसमेंट होके कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट तो दिखाई, बट इमीडिएटली अगर नेक्स्ट कैंडल नोटिस कर रहे हो, प्रीवियस हाई वॉल्यूम के ऊपर क्लोज किया। राइट, जब प्रीवियस हाई वॉल्यूम के ऊपर क्लोज किया, डेफिनेटली मार्केट इंडिकेटेड ए कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट, ना कि रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शन। राइट, ये वाला कैंडल एफओएमसी का था, जो कि not worth it for the time what was spent yesterday, but post that moment अगर नोटिस कर रहे हो, मार्केट हाई वॉल्यूम्स के साथ ही कंट्रीब्यूट किया। राइट, मतलब हाई वॉल्यूम स्ट्रक्चर, हर एक वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम कैंडल्स। कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब भी हाई वॉल्यूम मूवमेंट मार्केट सिंगल साइडेड 200% रैली देती है, जो कि हमारा सरप्लस मिनिमलिटी M1 200% का क्लोजर दिखा है। राइट, उसके साथ आज के दिन में मार्केट क्या करने वाला है? टू अंडरस्टैंड दैट, न्यूयॉर्क पीएम सेशन में हाई वॉल्यूम दिखाया, one single candle with an iceberg zone, second candle again a high volume development. Post that, market tend to structurized a movement plan, right, जो कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में डेवलप हुआ है। राइट, सॉरी, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में डेवलप हुआ है। राइट, इंडिकेशन ऑफ द मूवमेंट को समझो। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट क्या किया है यहाँ पे? राइट, मार्केट यहाँ पे हाई विक रेंज के साथ एक डेवलपमेंट फॉर्म किया है। राइट, फर्स्ट रिजेक्शन फ्रॉम सरप्लस मिनिमलिटी M1 200%, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी इन द मूवमेंट विथ बाइंग प्रेशर। राइट, अगर आज के एशियन सेशन में अगर कंटिन्यूअसली ये मूवमेंट फॉलो थ्रू में आता है, राइट, दिस विल बी द फोर्थ गैप अप पेंडिंग इन दिस मंथ। राइट, सो विच शुडंट बी द सिनेरियो एट फर्स्ट प्लेस। व्हाई? बिकॉज अगर ये नोटिस कर रहे हो, हाई वॉल्यूम फॉर्म होने के बाद मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है। राइट, अगर ये कंसोलिड सॉरी अगर ये कंसोलिडेटिव मूवमेंट के हिसाब से इन नेक्स्ट 3 आवर्स मार्केट अगर यही जोन ऑफ मूवमेंट में रहता है, then the market first plan of action will be to cover the gap liquidity and then continue the movement towards the long, right? Because अगर आज के दिन की डेली कैंडल नोटिस करोगे, मार्केट क्या इंडिकेट किया है डेली कैंडल में? मार्केट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर जो कि इनफॉर्मेशन ऑफ विक है। right? So in this formation, what do you notice? There is a gap pending and इसमें wick दिख रहा है, but IG में wick created नहीं है इसका. So the follow through of the movement will be towards the short side. Why I am saying you this? There is no wick. Understand in 1 hour what has market done, right? This was the opening candle, correct? With this opening candle, market hasn't crossed below the level to create a wick at the first point, right? जब ये wick create नहीं हुआ है, so definitely there is a coverage which is pending. अगर वो coverage complete होता है, तभी ही next holding plan of action में आएगी, not prior to that. राइट, तो उसके लिए द मेजर प्लान ऑफ एक्शन एट द करेंट स्टेजेस,
जोन ऑफ मूवमेंट 400 पिप्स की है, दैट्स टोटली फाइन, राइट। अगर सेटअप फॉर्म होता है तो ट्रेड होगी शॉर्ट की तरफ फर्स्ट, देन holding में continuity towards the long, right? So that should be the plan of action which indications the market values. So अगर market यहाँ पे reformation structure में build out दिखाती है, तभी ही trade of actions plan होंगे, उससे पहले नहीं, right? So for an example instant, if we want to look at फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से मैपिंग करते जाओगे तो एक भी सिनेरियो इस जोन पे मैच नहीं होगा, राइट। लेट मी शोकेस यू। अगर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मूवमेंट है, ये मैप करोगे M1 formation still in the zone, right? So let's take in perspective of this supply. Yes, definitely ये 100% से rejection लिया है, but in carry forward of the movement क्या market stability में है? नहीं, right? So in this zone high wick range है, wick से mapping, range allocation point 150% रिजेक्शन, राइट। जैसे ही 150% रिजेक्शन लेके सस्टेन हुआ है मार्केट, इट्स इन वन जोन ऑफ मूवमेंट पोस्ट 7:30 टुडे IST, UTC के हिसाब से इट्स इन and POI range for last 2 hours. Right? Let the market create a structural balance before a movement so that you don't give market what it wants. Right? Let the low volume traders give the major liquidity of dilution creation. Once the dilution is created, we will look for the plan of actions, not prior to that. Okay. So whatever doubts you guys are having, please do ask. सर ये क्या है लाइट्स? I'm always in your free sessions, so never missed it. सर फ्री ऑर्डर फ्लो एंड सोर्स मतलब समझा नहीं। चक्रवर्ती। जब तक मार्केट आइसबर्ग जोन में है तब तक के लिए नो प्लान ऑफ एक्शन विल बी लुक्ड इन होल्डिंग। डायरेक्शन डेवलप होने दो पहला, आज के दिन का। स्विंग ट्रेडर्स में जितना भी है वही ट्रेड ऑफ एक्शन चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, डजंट मैटर। मार्केट को बताने तो दो पहला मूव होने से पहले। करंट मूवमेंट किस तरफ की है? बुलिश साइड ही है।
Sir, MTS will explain Muddy. Just for an example, you have taken a trade at this point, followed with the entire, right? First range of motion, New York session hai, your SL will be at 60 pips, 50 to 60 pips, right? In carry forward of the moment, first candle gave a closure, second candle in continuity followed with a 100 pip movement. Your MTSL will be at 80 pips, your system trailing will be at CTC plus 10 pips, right? So this MTSL point, whenever the market doesn't close below this, you can hold the trade. If the market creates a wick and close below it, then you exit. That is the simple plan of action with this structure. Okay. So whenever the follow through movement is developed, if the market has given you 100 pip movement, MTSL will be at 80 pips, system trailing will be at CTC plus 10. With this, if the market continued the movement for 150 pips, your MTSL will be at 100, system trailing will be at 40. Right? Market continued the movement with 200, MTSL will be at 150, system trailing will be at 80. Right? You have to give the gap for the movement to understand. So after completing 100, 150 and or 200% as price rejects setup forms, we look for entry at next candle conversion, struggling to make entries there as now a day's rejection is big. And if I look for entry in the next candle, the conversion, the SL becomes huge. So how to tackle this? Please give an example. Rules is very simple. If the formation has created, you know the rejection point, right? Market always creates a wick conversion first, right? If it's rejecting from 100%, 150%, yeah, 200%, first action plan is to diversify the movement, right? Second, wick creation. That's the reason I have said clearly, let the market give the third candle for S2B1, right? That's when your SL can be at the smaller range at the current category. Okay. So you don't have to rush to execute the trades in the second candle itself. Let the market create an intact and continue. That could be the best way for you guys as a beginners to hold the trade. Okay. सो आप लोग सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल में एग्जीक्यूशन देखते हो जो कि एसएल रेंज बड़ा होगा ही होगा, right? Till you gain the experience, execute with S2B1, S2B1 intact only. Don't go for an execution at a rejection directly or a second candle conversion. Let the market create a third candle to the play. Am I clear? How is funded firm? Scamsters. अगर funded firm पे trade कर रहे हो तो learn to give SLs. 100% win rate रख के चलोगे, your account will be breached when you ask for a payout.
92% रख के ही उन लोगों ने ब्रीच कर दिया। कितना भी रूल्स फॉलो कर लो, एक पे आउट देंगे, दूसरा पे आउट देंगे, तीसरा पे आउट, दे विल ब्लॉक यू। दे लिटरली बैंड अस। 4 अकाउंट का मिला के हमारा विन रेट था 92 प्लस, प्रॉफिट फैक्टर 6.2 समथिंग। राइट, कल ही डिस्कस कर रहे थे, यही वाला है शायद। या, राइट। दिस इज 4 अकाउंट्स विन रेट। आ गया। 4 अकाउंट मिला के विन रेट जो था 92.31 था। राइट, प्रॉफिट फैक्टर एट 6.10। दे ब्लॉक्ड ऑल द। हाँ, नो डाउट, जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसका 10 गुना तो आ गया। Even then, when they are following certain rules, first is the trust. When they can't hold the trust, it's gone. कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो। So be very selective with the prop firms you guys fit. Not promoting, as per me, current stage में तीन ही prop firm अच्छा कर रहा है, which is one, Tradify, second, Funded Next, third, Apex Trading करके एक है, right? So उनका futures is good, right? थोड़ा rules strict है, and funding pips as a beginner, UPI transactions के साथ करना है तो funding pips. Even their rules is a bit stringent, 1% rules are there, but इन लोगों में इतना है नहीं. Mainly payouts on time. Tradify से हमने 7 पे आउट लिया है अभी तक, नो इश्यूज। फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स में वी हैव टेकन 3 पे आउट्स, बट वो 1500 1500 1500 का रेंज में ही आ रहा है, टिल 5 पे आउट्स। पोस्ट 5 पे आउट्स the limit will be removed and we can withdraw how much ever we want. लूसिड का अकाउंट नहीं, नहीं अभी खरीदना है मेरे को। उनका इंफ्रा और यूआई यूएक्स एंड रूल्स अमेजिंग। बट इज इट लीगल इन इंडिया? prop firms, how this funded next business model works, how do they make money? As most of the trader accounts are bridge losing more than what they have paid. The reason behind breach is because they are over trading. No, the rule is very simple: 2 trades a day, hold the targets. Right? If your account says, just for an example, मान के चलो
is of 100K या 50K, right? 50K's 1% rule is what? $500, right? Execution margin कितना होना चाहिए? 50K का अकाउंट है तो you can utilize up to 40. 100K का है तो you can utilize up to 70K of the capital, sorry, right? उसके साथ ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन सिंपल रखो, होल्डिंग ट्रेड्स पे फोकस करो। स्कैल्प करने जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अकाउंट्स ब्लो होंगे, राइट? एंड बिजनेस मॉडल के हिसाब से जानना चाहते हो, चैलेंज फेस आर नॉट अ exact live account, that is a demo account which is simulated. Once you pass that account, then you get a real account wherein the trades what you punch gets punched at the broker level as well. That's the reason they are able to pay, right? So if it was not punched, like funded firms and all, वो लोग punch नहीं कर रहा है, right? Loss इधर बनाया लोगों से, यहाँ पे कोई पैसा आपको दे रहा है, right? अगर ज्यादा पैसा मांगने जाओ, बोल देंगे कि चलो हो गया, ब्लॉक कर देंगे. But whenever there is a liquidity backed investors, right? So जब भी सीड फंडिंग्स है या सीरीज ए फंडिंग है, सीरीज बी फंडिंग्स है मार्केट में, that's when the real game comes into the play, right? Apex trading firm has given a payout worth of $625 million till date in last 5 years, right? Funded Next has given a payout worth of $300 million approximately, right? 250 to 300 million, right? And Tradify has given a payout worth of $375 million, right? उतना ट्रेडर अकाउंट भी नहीं है. अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान के चलो 1 लाख ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है एंड ट्रेड कर रहे हैं. If 1 lakh trader has given, everyone has given $300 also, right? How does a company can pay $300 million wherein they have made only 300K out of, right? Sorry, $3 million out of. So that's the simple rule, right? Select the firms who is backed with fundings, who is backed with the broker, who is backed with, when your trades are punched, that trades is being allotted in the real markets. Okay. Lucid is also backed by one of the Australian companies. वो लेना है आपको, लेंगे. सर लाइव अकाउंट में जो लिया था आपने फंडेड नेक्स्ट का, उसका क्या हुआ? एक ही ट्रेड हुआ यार उसमें. $1,200. जब रियल अकाउंट में पैसा फ्लोइंग हो रहा है ना, तो फंडेड अकाउंट में ध्यान नहीं देना चाहिए. सो दैट्स द रीजन वी हैव केप्ट इट असाइड. By next week we'll be having a loophole for every given prop firms as well. I'll bet on it. We are already working on it as well. मान के चलो. एक सेकेंड ना, बताता हूँ कैसे. We have already cracked it by 75%. अगर 90% के ऊपर क्रैक हो गया, so that is the only loophole which all the prop firm has, and yet no one has discovered in the market for last 7 years. And we have started prop firm trading in 2026. Not even 1 month completed.
अगर मैं बोलूं आपको कि प्रॉप फर्म में गोल्ड के हिसाब से 100K के अकाउंट में, एक सेकेंड, यस, प्रॉप फर्म्स, this is just an example, okay? You have an 100K account, sorry, okay? As per 1% rule, you can use $1,000. As per margin, you can utilize two lots, right? If अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, राइट, मान के चलो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट इज इन द रेंज बाउंड फॉर 3-4 years, इस पोजीशन में अगर आपको 200 पिप्स भी कैप्चर करना है गोल्ड के हिसाब से, $2,000, राइट? सेम सिनेरियो 50K के अकाउंट पे 1% रूल के हिसाब से $500 का रिस्क, maximum lot size as per the margin allotted is 0.5 to 0.6, right? $1,000, right? इतना भी कर लो, इससे ऊपर उसमें दिखेगा नहीं जब तक आप होल्डिंग में नहीं डाल। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड द लूप इन दिस, there is few scripts which no one is talking about till date, okay? If you have, एक सेकंड रुक जाओ, TTS लो, if you have 100K account, rule is simple, risk is 1,000 only, lot size will be 0.5, and profit for just $4 movement is $10,000. Same scenario, point two, 50K account, risk is 500, 1% के हिसाब से, lot size is 0.2, profit is of $5,000, right? कैप्चर आपको कितना करना है? सिर्फ 4 ही पॉइंट। Why no one is talking about this? Because no one knows about it. As simple as that. Right? जिस दिन ये स्क्रिप्ट लोगों के पास चली गई, उस दिन प्रॉप फॉर्म्स वाले उस स्क्रिप्ट को ही हटा देंगे प्रॉप फॉर्म से। मार्क माय वर्ड्स। बिकॉज एक ट्रेड 0.5 लॉट से जब 10,000 दे सकता है सिर्फ 4 पॉइंट की मूवमेंट में, क्या पीपल विल ट्रेड फॉर 200 पिप मूवमेंट? डेफिनेटली यस, वी विल ट्रेड इन ए रियल अकाउंट। बट अगर प्रॉप फर्म के हिसाब से अगर मेरे को देखना है, आई विल नॉट ट्रेड इन गोल्ड एट ऑल।
हाँ, मान के चलो, जिनको पता नहीं है वो गोल्ड में ही ट्रेड करेंगे ना, राइट? सेम लॉट साइज अगर आप यहाँ पे भी यूटिलाइज करोगे, $1000 है, राइट? बट सेम एक ट्रेड 0.5 लॉट से आपका चैलेंज फेस पास. दैट्स हाउ सिंपल दिस लूप इज. जस्ट ओवर एग्जीक्यूशन नहीं करना, ग्रीडी नहीं होनी है, सेटअप के साथ ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, 4 पॉइंट्स कैप्चर, द चैलेंज इज कंप्लीटेड. अगर कोई भी ये चीज आपको बता दे तो समझ लो he is understanding the market in and out. Let it be prop firm, let it be real account trading, let it be any kind of executions in the market. Till the time he is not understanding this, he is not understanding this. Definitely, he might be a good trader, but can he be a player in the market? No. Because whenever you're having an opportunity, the first few gets the opportunity to grab it out and make hell lot of money out of it. जब मार्केट में पता चल गया तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर देम, राइट? People who are not executing the trades in the real markets, prop firms who are not executing your trades in the real markets, right? So that are the few major things which needs to be always taken under the consideration, right? So prop firm हमने खरीदा ही क्यों at first place when we had so much of capital to trade in real account, right? Because the one interesting part, कोई भी बिजनेस लो, कोई भी गवर्नमेंट लो, कोई भी मार्केट लो, या कोई भी कॉर्पोरेट जॉब लो, हर एक जगह पे लूपहोल होता ही है. So we just wanted to check, do we have any loopholes in prop firm? So I thought the answer could be no, but unfortunately 2 दिन में हमने loophole identify कर लिया prop firms का. As simple as that. So think, which script can provide you $10,000 with just 0.5 lots, with following the same risk to reward as gold? If you get this answer, you will understand which script it is. And please don't say it to anyone till the time you make money out of it and you get a good amount in the account. As simple as that, right? Good morning, Raj. Can you explain what is marked on the charts, please? It's a diversification of the movement which has been planned to execute the trades and hold till the directions. Sir, I purchased two-step 25K account. Okay. Good morning, Arya. जितने भी लोग YouTube हॉपिंग करते हो ना,
वो लोग जाके आपका फेवरेट फिन इन्फ्लुएंसर जो है उनके पास पूछ लो which trade of execution by 0.5 lots capturing 4 point movement gives you $10,000. As simple as that. उनका फर्स्ट जवाब आपके लिए होगा कि ऐसा भी कौन सा तो चार्ट है क्या. Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. 25K अकाउंट लॉट साइज किस पे यूज कर रहे हो? व्हाट्स द फॉर्म युवराज? फंडेड नेक्स्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन राइट. हाँ, 0.3 तक जा सकते हो राइट. Risk per trade will be of just $250, not more than that. 1%. Sir, how could you play the scenario if the intact is pending from both the supply and demand side? I'll just wait till the right price action is not formed. Good morning, Suresh ji. And congratulations of multiple 300 plus 4,000 pip movement captured. Good job. मैं फर्स्ट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन इतना ही देखूंगा रितेश. अगर मार्केट आइसबर्ग जोन में है राइट, जिस डायरेक्शन पे मूवमेंट है उस तरफ का मैं इंटैक्ट अलॉट करूंगा. Which form is good and allowed in India? I just said you Tradify, Apex Trading, Funded Next. This three we are using continuously. Funding pips ज्यादा rules है and consistency rules सब है उसमें both. So if you're okay to be followed with a disciplined trading, then funding pips.
एंड अनुराग, सिंपल चीज है, राइट? हर एक चीज को पकड़ के बैठे रहोगे कि अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है कि नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल है, राइट? Rule is very simple. Everything has a loophole. Even prop firm does in Indian markets. As per the circular of Indian government, forex trading is not allowed. But till the time you are not deploying the money to a market, how are you trading in a market, right? So that's where prop firm comes into the play. Prop firm में तुम एक account खरीदते हो and you trade in behalf of a broker, right? So, in perspective of that, you are just consulting and providing a trade to a firm. So, which comes under the Tax Regulation Act of consulting. So, whatever profits you make on that, you have to give a ITR filing for the profits which you have got on consultancy. Right? So जब भी consultancy tax लगाते हैं, that is up to 18% and it's a regular income counted. It's not calculated under any crypto tax or anything as such. But they block bank accounts, that's why. भाई एक दो लोगों का बैंक अकाउंट्स बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों का होता है. There might be some irregular transactions done by them, so they might have freezed it. And in this current era, people use around three bank accounts on a regular basis. One is used in perspective of family, one is used in perspective of portfolio, one is used in perspective of allocations with expenditure, right? So expenditure account को link करो जहाँ पे भी trade कर रहे हो, right? So if it gets blocked also, that could be not harming your main income source of bank, nor it will be harming your portfolio bank. And OB आपको तब भी देना पड़ेगा tax in perspective of a government when you're making more than 10 lakh rupees annually. Which sections does it take a role play in Tax Act? 1961 section 194 J शायद J या B होगा, right? On professional and technical consultancy जो कि हम कर रहे हैं, उसके ऊपर जब भी आपका पेमेंट इन अकाउंट 50,000 के ऊपर आता है in the financial year, then you file the returns, right? उसमें से deduction of the cost of overall tax will be of 10 to 18% with presumptive tax of 7%, right? उसमें भी तुम 50% डिक्लेयर कर सकते हो एंड 50% एक्सपेंडिचर्स में दिखा सकते हो इफ यू आर डूइंग इट थ्रू अ कंपनी रजिस्टर्ड, राइट? उसके लिए आपको सेक्शन 44 में एक एडीए करके है, उसको इम्प्लाई करके यू कैन डू इट आउट. ओके.
कौन सा फॉर्म यूज करना है? 26 years. I have purchased account. That doesn't matter. Till the time you are not showcasing anything, you have just given the money for a firm which will play a role as an act. That's it. Arya, say me one thing. I read your message, right? Okay, share it. Let me check once. Okay. Say me which script it is. हर एक चीज स्पून फीड किया नहीं जाता है. मेहनत करो. इन जो $100, सॉरी, ₹100 के ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं, उन लोगों को लूप होल फाइंड करना छोड़ो. एग्जीक्यूशन आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होती है. सो you should know how to talk to a person when he has played in and out of that game. Okay. Definitely, Arya. Then why don't you showcase the trades you have executed? For your kind information, ग्रुप में हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट जो होता है वो दिखता है. Okay. And Mr. Shreyas Agarwal, एक दो लॉट से ट्रेड करने वाला बच्चा समझा है क्या?
एनालिसिस लाइव में करता हूँ, लाइव में टारगेट सेट होता है तो समझ ले। एजम्पशंस पे नहीं जीता हूँ, हकीकत में रहता हूँ। तो आई नो माई फैक्ट्स व्हाट आई डू। एंड ये मत सोचना कि आप एक बुरा कमेंट कर दिए तो मेरे को याद नहीं रहेगा। आई विल रिमेम्बर दैट, एंड पीपल who are watching, definitely I'm going to give a word back on that as well. हर एक कमेंट याद है, एंड नेगेटिव कमेंट से पॉजिटिव कमेंट्स में कन्वर्ट हुए इंसान भी याद है, ठीक है। इन ग्लैंस, अगर जिनके पास भी फ्री टाइम है, जाके चार अकाउंट्स देख सकते हो। एक नाम है recent last 2 months में हुआ, from a negative comment to a positive comment converter, एक ऑनलाइन श्रेयस अग्रवाल 746 विधि एंड लियो। दिस इज जस्ट इन लास्ट 3 months। ओके सर, ऑल्सो एक डाउट है, आई हैव एग्जीक्यूशन पैरालिसिस when I don't know what kind of rejection I am looking for, so kind rejection पे we hold and कौन सा rejection पे we get out। ये डाउट नहीं है, ये फॉग है, ब्रेन फॉग है, राइट। उसको निकालने के लिए यू हैव टू मेडिटेट, राइट। सो वेरी सिंपल, एक प्लान ऑफ एक्शन समझ। जब भी एक रिजेक्शन फॉर्म होता है ना इंटैक्ट पॉइंट के पास, राइट, एक बार दो बार मैक्स, अगर दो बार के ऊपर उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे सस्टेन हो रही है तो समझ लो योर एग्जीक्यूशन इज रॉन्ग, right? Major sustainability in the market at intact points or rejection points, हमेशा याद रखना, दो रिजेक्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए at any given point, any given time frame, 1 hour हो या 15 minutes हो, right? दो बार से ज्यादा नहीं, ठीक है। Stream will be there for next 5 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. अगर लोग सोच रहे करके मैं ही सोच में भेजो तो वो क्या काम। वो रिजेक्शन नहीं है, ब्रेन फॉर है, उसे हटा। बुक्स पढ़ रहा है तू? हाँ, ये तो पढ़ता है।
He's traveling. बाली गया है बंदा. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. पूछो. नहीं एक्चुअली वो एक ही बंदा है जो यूट्यूब पे बोलता है. दूसरे सब जूम पे बोलते हैं. सो उतना फर्क नहीं पड़ता. इस बुक्स पढ़ता हूँ. मेडिटेट करता हूँ. तो इंक्रीज करो मेडिटेशन टाइमलाइन. 30 मिनट्स कर रहा हो तो 1 आवर पे लगाओ. ठीक है. अपनी लाइफ स्टाइल बताया था एक बार, वो फॉलो कर रहा हूँ. क्या तुम 3 बजे उठ रहे हो? अगर 3 बजे उठ रहे हो ना, मान लिया करो. अब बताओ मिस्टर श्रेयस, कौन सा सपोर्ट है या कौन सा डिमांड है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन हो रही है? आई डोंट माइंड. नहीं नहीं, 5, इतना भी नहीं. ओके. एक वीक के लिए 3 बजे उठो, राइट? 10 बजे सो जाओ या 9 बजे सो जाओ. सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ. When your chakras get activated, no, everything is possible. And activation of all the 7 chakras is done in Brahma Muhurat, which is 5 to 4:45. Sorry, 3 to 4:45. एक हफ्ता उठ. See the life transformation after. नहीं नहीं, हम वैसे देखते ही नहीं है. दुबई में हो, इंडिया में रहो, स्विट्जरलैंड में रहो, 3 बजे मॉर्निंग, 3 बजे मॉर्निंग. मंडे टू थर्सडे ओनली. सॉरी, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे नहीं. इट्स अ पार्टी टाइम. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलोकेशन डालो. डिमांड 100%, 1 आवर का जब ब्रेक होगा, नेक्स्ट अलोकेशन एमटीएसएल के साथ. हाँ. इफ यू डोंट पार्टी यू डू सैटरडे संडे. पार्टी के दिन 3 बजे स्लीप. नहीं नहीं, पार्टी के दिन 48 आवर्स नो स्लीप.
430 pips. आपने पार्टी करते हुए देखी कहाँ है जगह? So 3 more minutes on candle closure. Beautiful moment. यहाँ पे कौन सा ट्रेंड लाइन वर्क हो रहा है, कौन सा सपोर्ट, कौन सा डिमांड, बताओ। कौन सा ईएमए काम कर रहा है, बताओ। एंड कौन सा वॉल्यूम प्रोफाइलिंग काम कर रही है, बताओ। If I'm humble, I'm humble enough. Don't check my patience. I have a really good patience level. जिस दिन भड़का उस दिन गए. As simple as that. Nothing more, not nothing less. ठीक है. गैप लिक्विडिटी पूरा लेने दो, तब जाके नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. Not prior to that. All the beginners, I don't care what strategy, what rules, what formulations you guys follow. Make sure you do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis. Then, in line with a smaller capital, compounded with following a proper risk to reward. While following a proper risk to reward, make sure to remove fear, greed, and FOMO while executing the trades. Right? Don't give your accounts to manhandle nor follow tips. Learn before you earn because it's your hard-earned money. One good trade is taken by mindfulness, your analysis, your setups, your executions, and your patience in the market to go. Winnings will give you happiness, losses will give you learnings. Learn while you execute. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली स्ट्रीम पे. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.